Hello my dear students of standard 8, welcome to all of you in today's online class. My dear students, as you all know it very well that we are learning the chapter 9. The chapter 9 is under progress. The name of the chapter is Reproduction in Animals. Dear students, this chapter is going on. So dear students, I hope all of you are learning very well and you are using your best learning skills, and I hope all of you are trying to learn all the concepts clearly and properly. There is no any doubts, and if you have any doubts regarding any contents, any matter, any topic, contact to me immediately. I will try to sort out your all problems. Dear students, in my previous video, what types of the discussions we have done in my previous video. So dear students, let us recall at once what types of knowledge you have got in my previous video. If I want to know the query regarding that, then all of you must ready for that. Dear students, in my previous video, you have seen about the what are the contents? In vitro fertilization. In vitro fertilization means test tube baby, how the test tube baby takes birth. What are the some certain reasons due to that women cannot be considered as a competent in fertilization or reproductions. What are the main reason? What are the main aspects, main things to which a woman cannot produce baby its own? The reason behind only that, due to some problems inside the reproductive body parts, just like I have told you, blockage of oviduct and problems in fallopian tubes. All these things, disturbance leads to cause types of disturbance in the body, and due to that the woman cannot produce the baby its own due to this reason. So today we are just going to describe a new concept. This is new one from the previous video. There is no any correlation. This is the new things, but there is an interconnection between that. Metamorphosis. Metamorphosis, this is the proper topic on which we will continue. Metamorphosis क्या होता है? The questions, metamorphosis क्या है? Let us read. The process of transformation from an immature form of an animal like larva to its adult form into a more distinct stage is called metamorphosis. How can you understand the terms metamorphosis? Dear students, we have classified the whole types of the creations, reproductions in case of the eggs, oviparous and viviparous animals. Oviparous and viviparous animals, you have learned that there are some animals, some kinds of the species which directly takes birth, just like human beings. Their appearance must be like that. But there are some certain birds, just like hen. Okay, if you take an example of hen, then hen lay eggs, but after the hatching process, the chicks which come out from the eggs, it will be the same. It has the same appearance. It has the same size, appearance and figures, but it is a young ones and it is a immature, and it is not considered adult. But all the physical appearance must be similar to the parents. Whether it is immature and it has the minimum size, it is a young ones, but all the psychic figures and physical structures and body design must be similar to that. So dear students, in case of frog, if you take an example in case of frog, so frog lay eggs and fertilization takes place externally, and the fertilized eggs form zygote, and the fertilized eggs, that is the eggs. So आप देखो एग के केस में देखोगे कि एग में जब वो फर्टिलाइज एग के बाद, जब रिप्रोडक्शन की कंप्लीट फर्टिलाइजेशन के बाद एग का जो टैडपोल्स निकलता है, तो टैडपोल्स दैट और लार्वा, इसको लार्वा भी कहते हैं. तो टैडपोल के जो ये अपीयरेंस होता है, ये फ्रॉग जैसा नहीं दिखता है. मैंने अभी एग्जांपल बताया कि जैसे हेन के केस में जब हैचिंग प्रोसेस होता है, तो एग से जो हेन का बच्चा निकलता है, चूजा,
तो उसको देखो, उसकी अपीयरेंस का मतलब है उसका शेप साइज भले छोटा होगा, लेकिन जो उसके पेरेंट्स में है, जैसे हेन में और कॉक में है, उसी तरह तो सिमिलर उसका बॉडी फीचर्स होगा। तो बॉडी फीचर तो सेम होगा, लेकिन वो छोटा है साइज में, यंग वंस है। लेकिन यंग वंस की बात करूंगा मैं, यंग में छोटा सा जो स्प्रिंग्स में टैडपोल्स के केस में, इन केस ऑफ फ्रॉग, as you know that frog, in case of frog, that is the exceptional case because the fertilization takes place externally in case of the frog. तो फ्रॉग में देखोगे कि जब हैचिंग प्रोसेस होगा, जो टैडपोल्स निकलेगा, ये लार्वा, ये एकदम डिफर होगा फ्रॉम द फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। इट्स बॉडी फीचर्स, ऑल दीज थिंग्स, दैट इज कंसिडर्ड एज यंग वंस। तो अब इसको एडल्ट होने तक में इसका जो फिगर है, ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा फ्रॉग जैसा। जैसे फ्रॉग का होता है वैसे ये मैच नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टैडपोल्स की केस में, तो ये मैच नहीं करेगा। तो ये मेटामॉर्फिस स्टेज होंगी, कई स्टेज होंगी, उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। तो ये डेफिनेशन जो बता रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर, दैट इज टैडपोल, immature form at an animal like larva, okay, like larva to its adult form. एडल्ट फॉर्म में आने के लिए, एडल्ट फॉर्म की ओर बढ़ने के लिए, एडल्ट फॉर्म मेच्योर सिचुएशन गेन करने के लिए उसको कई स्टेज में गुजरना पड़ता है। एक या दो, 2 or more डिस्टिंक्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और वही स्टेज जो डिफर होती है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस refers to the types of the durations period, okay, due to which a young one's larva acquires the adult stage due to bypassing some stages, that refers to metamorphosis. So just you are looking in case of diagrammatically figure, just students you look here, you can look here, this is the egg of frog that is fertilized, okay. And you know that how does fertilization takes place in case of the frog. So frog, in case of frog, external fertilization occurs. So after aquatic, this is the aquatic animals, the frog is considered as aquatic animals, there is no doubt in it. So frog, that is the after hatching process. Hatching, you know that the revealing out of the species origin from eggs, that is refers to the hatching. Hatching process के बाद ये जो tadpoles बना, that is larva. अब ये लार्वा देखो, इसका जो फिगर है, क्या फ्रॉग ऐसे ही रहता है क्या? फ्रॉग आपको नहीं दिखेगा, फ्रॉग ऐसे होता ही नहीं है। ये एडल्ट वंस है, लेकिन ये फ्रॉग से फिजिकल अपीयरेंस, इसकी बॉडी डिजाइन देखो सब कुछ डिफर कर रही है। ये अपने यंग वन पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है। ये जब फ्रॉग एडल्ट में कन्वर्ट होगा, बहुत सारी स्टेज गुजरेगा, तब ये टैडपोल्स आपको फ्रॉग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। This types of process can be proceeded in case of the silkworm, ठीक है, सिल्कवर्म, मॉथ सिल्क। तो उस केस में भी हम देखते हैं, उसमें भी लार्वा फॉर्मेशन होता है, सिल्क मॉथ इन केस ऑफ द सिल्कवर्म। तो आप देखिए उसमें भी लार्वा होता है, सिल्कवर्म सिल्क फॉर्मेशन में आप उसमें कैटरपिलर लार्वा फॉर्मेशन होता है। सो दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन केस ऑफ द बटरफ्लाई, इन केस ऑफ द कैटरपिलर एंड इन केस ऑफ द सिल्कवर्म। So this types of the process, as you are looking at the tail of the tadpole. Tadpole की देखिए tail जो होती है, tail helps the tadpoles to swim and change the direction. And you know that tadpoles, that is the different, and it is so micro and so minute, and due to that the tadpoles eats some aquatic plants and some animals which are so small, and it survives. And after some certain period of time, it will gain its the adult form stage after some stage. Due to that, और वही stage को हम लोग कहते हैं metamorphosis, and that stage is referred as the metamorphosis. Metamorphosis, उसी stage को हम लोग कहते हैं metamorphosis. Okay, students. So I hope all of you have understood the terms metamorphosis. Yes, students. Just we are looking that metamorphosis in case of the silkworm, in case of the butterfly, you can explain yourself. Metamorphosis in case of the silk moth. Silk moth के केस में भी आप ऐसे दिखा सकते हो। सिल्क मॉथ एडल्ट ग्रो करने में भी वही चीज फॉर्मेशन होता है, उसमें भी लार्वा फॉर्मेशन होता है, पुपा,
and I hope all of you have learned this content in previous classes also. So metamorphosis process क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा students. So next one, that is asexual reproduction in animals. Asexual reproduction in animals. We will describe about the asexual reproduction in animals. My dear students, let us describe asexual reproductions in animals. So dear students, all of you have learned about reproduction in animals, and we have seen the process of reproductions and fertilization also. But there are some certain animals just like bacteria and just like amoeba. We are talking about in case of especially amoeba and paramecium, and there are some hydra small animals which will be considered as a matter of asexual reproductions. So all these types of the species just like amoeba and hydra and other animals just like paramecium, which go under process of reproductions, but mainly asexual reproductions. So asexual reproductions, majority of asexual reproductions can be seen in case of the plants, but there are some special cases, exceptional cases, through which we can explain the asexual reproductions phenomena related to the animals also. So dear students, so far you have learned that including human beings and some other animals, we have seen that reproductions can be explained on the basis of sexual reproductions, because sexual reproductions is the fusion of the gametes, male gametes and male sex cells and female sex cells. So due to fusion of that, new species and new organisms forms. So this process you have known so far. All of you have understood this process so far. But we are talking about, in case of amoeba, asexual reproductions. In case of amoeba, how does amoeba reproduce its own by involving by the process asexual reproduction. So asexual reproductions, that is the refers to the only single parents can reproduce its own identical types of the species organisms, that is the daughter cell. But how this process keeps on in case of amoeba, just describe in detail. Dear students, as you know, the amoeba is a unicellular organism, and all these types of the basic function can be seen in case of amoeba. Amoeba, just like basic function includes respirations, digestion, ingestion and excretions. All these types of the process can be seen in case of amoeba. So amoeba being a unicellular organism, it can divides and splits into its own identical types of the amoeba that are known as the daughter cell, and this is the male cell. So amoeba can split into two daughter cells. So the asexual reproductions can be explained by using two types of the methods. First is binary fission and next one is the budding. So we will discuss about the first binary fission. बाइनरी का मतलब होता है पेयर. बाइनरी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइनरी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? पेयर. व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बाइनरी? बाइनरी रिफर्स टू द पेयर. ओके, बाइनरी का मतलब होता है पेयर. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? टूटना. जैसे मैं यहाँ पे आज बात करूं बाइनरी फ्यूजन. अब देखिए फ्यूजन और फ्यूजन दो वर्ड होता है स्टूडेंट्स. फ्यूजन का मतलब होता है एडिंग, जुड़ना. जैसे आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल गमेट्स, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स, फीमेल गमेट्स, then that is the refers the fusion. But here we are going to understand the fusion meaning is explosion, splitting. ठीक है, splitting. तो यहाँ पे split होने की बात हो रही है. आप यहाँ पे देख सकते हो amoeba which has gained its the higher size. Amoeba has reached up to the maximum size. Amoeba has gained the maximum size. As the amoeba reaches to its maximum shape and size, then it has ability to strengthen
the nucleus. Nucleus length increases. Okay, so the length of nucleus increases, and as you can look here, is the length of nucleus can be seen that there is a expansion in nucleus of amoeba. So you are looking that this nucleus is going to expand, and you can see the large expansion of distortion in nucleus. So nucleus has become so greater and it has lengthened. अब देखिए, अब यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा सा डिवाइड होने की कगार पे है. देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड हुआ है. ये द फर्स्ट स्टेज, ये आपका अमीबा अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर चुकी है. अब यहाँ पे देखिए, ये अमीबा के केस में यहाँ पे आप देखोगे न्यूक्लियस ये थोड़ा सा डिवाइड होने की पोजीशन पे है. ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज. साइटोप्लाज्म ये देखिए, साइटोप्लाज्म यहाँ पे फिलअप है लिक्विड मटेरियल्स. अब यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट स्टेज में आफ्टर दैट ये देखो कंप्लीट न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है. देखो न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. न्यूक्लियस देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म एक ही है, इसी के अंदर ही है. अभी पूरा होल न्यूक्लियस इसी के अंदर ही है. स्टूडेंट्स लुक एट दैट. अभी देखो यहाँ पे पूरा होल न्यूक्लियस इसी के अंदर है. द नेक्स्ट स्टेज you can see that the cytoplasm divides. साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है. देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो गया. तो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू स्मॉलर अमीबा प्रोड्यूस्ड हो गई है. ये कौन से प्रोसेस से स्टूडेंट्स? बाई बडिंग प्रोसेस. बडिंग नहीं, बडिंग तो हाइड्रोजन होता है. बाइनरी फिजन. ये बाइनरी फिजन का रिजल्ट है, जिसमें ओनली वन अमीबा दैट इज नोन एज द, आप देखिए इसमें एक डॉटर सेल होते हैं, पैरेंट सेल, दैट इज रिफर्ड एज पैरेंट सेल. तो ये पैरेंट सेल अपने टू डॉटर सेल्स में ये देखिए जनरेट हो गई है. अब ये दोनों अमीबा आइडेंटिकल होंगे, सेम साइज के फिगर्स में, जस्ट लाइक अमीबा. और ये अमीबा आगे मल्टीप्लाई होकर के सेम प्रोसेस से बाइनरी फ्यूजन से फिर ये 4 टाइप्स ऑफ अमीबा में डिवाइड्स कर देंगे. तो दिस प्रोसेस विल कीप ऑन. ओके, एंड विद इन 1 आवर, 1 घंटे में अमीबा कैन स्प्लिट्स एंड divides into 2 daughter cell, and this process will keep on. So amoeba, the reproductions in case of amoeba can be explained on the basis of asexual reproduction that we have explained here. Friends, I hope all of you have understood it clearly, and we will discuss about the budding and cloning process. Budding and cloning in next video. How does what is the cloning and how does budding takes place? Dear students, so watch till then, wait till then. I will meet in next video, and we will be discussing about the cloning and budding in case of the hydra plants, and we will discuss about the paramecium, and there is another things in which we can explain the asexual reproduction. So dear students, wait till then, and the homework which will be given at the last of the video, you must take the screenshot of the given homework. Thank you students. Dear students, you all are required to take a screenshot of the blackboard to get the proper homework. Dear students, take a screenshot to get homework. Dear students, take a screenshot so that you can get proper homework. And all of you must do the proper homework in time. So dear students, I hope all of you have taken out a screenshot of the blackboard. Thank you.